And today I am going to tell you about HIV. As all you all know that HIV, human immunovirus, is a causative agent of deadly disease which is AIDS. And today we are going to discuss about the structure of AIDS. So today I will tell you about structure of HIV. I will tell you about structure of HIV, human immunovirus, which is a causative agent of AIDS. Now, like other viruses, HIV also has two parts. Its central part is called core, and its covering are called coats. Now, look at here. This is the central part of virus. This one is these RNA, these two RNA, and these three enzymes. And these three enzymes, they are present in the central part of virus. So they both together form viral core. These are the viral core. So in viral core, especially in HIV, there are RNA and enzymes. How many RNAs are present here? You can see here there are two RNA are present. There are two RNA. Now these two RNA are identical but not complementary. Now, what do you mean by identical and complementary? Let's look here. I'm trying these two RNAs. As you know that RNA are nucleic acid, and nucleic acid are made up of nucleotide. The same here, these RNA are also made up of nucleotide. For example, this RNA is made up of adenine, uracil. I will not use thymine because thymine is present in DNA, and instead of in RNA, instead of thymine, uracil is present, guanine and cytosine. And this RNA also has adenine, uracil, guanine, and cytosine. Now, both of these RNA are identical. Both of these RNA are identical. They have same sequence of nucleotide. If I draw these RNAs in this pattern, here adenine, uracil, guanine, and cytosine, and I am now in this RNA. If uracil is present instead of adenine, if adenine is present instead of uracil, if cytosine is present instead of guanine, and if guanine is present instead of cytosine. Now these two RNA are not identical, they are complementary. Why they are called complementary? Because in RNA, the complementary of adenine is uracil. The complementary of uracil is adenine. And the same way, the complementary of guanine is cytosine. And the complementary of cytosine is guanine. Now here you can see these two RNAs are complementary. But here these two RNA are identical. They are identical. That's why they do not form double strand. They don't join together and they will not form double stranded. So these two RNA are identical and they are single stranded. They are single stranded. If they were if they were present in complementary sequence, they will become double stranded, but they are single stranded. So now there are two RNA, and these two RNA are identical, but they are not complementary. And they are also single stranded. Now enzyme. There are three enzymes are present in the struct in HIV. Now these name of these three enzymes are, so for example, this one is reverse transcriptase enzyme, and this one is
integrase enzyme, and this one is protease enzyme. Now, what is the function of all of these three enzymes? Look at here. When this is a host cell, and when HIV virus attack on this host cell, and when it transfers its RNA into the host cell, now this RNA, first of all, this RNA will make messenger. This RNA will make a DNA. This is RNA. This one is RNA, and it will make DNA. This is RNA, and it will make DNA. Now, which enzyme is used for the formation of DNA from this RNA? The name of enzyme is reverse transcriptase. This enzyme, this enzyme, reverse transcriptase. This enzyme help. What is the function of this enzyme? This enzyme convert RNA into DNA, and the formation of RNA from DNA is called reverse transcription. The formation of DNA from RNA, sorry, the formation of DNA from RNA is called reverse transcription. The first enzyme is reverse transcriptase. And what is its function? Its function is to convert RNA into DNA. Second enzyme is integrase. Second enzyme is integrase. Now, what is the function of integrase enzyme? So, for example, this is the DNA of host cell. This is the DNA of host cell. Now, this DNA which is formed by RNA, the DNA which is formed by RNA with the help of reverse transcriptase enzyme is called complementary DNA. This DNA is called complementary DNA. Now, this complementary DNA will attach. This complementary DNA will attach with the host DNA. This is the host DNA. Now, which enzyme help with attachment of this complementary DNA with host DNA? The name of enzyme is integrase. Integrase enzyme will help in the attachment of this host DNA, this complementary DNA with host DNA. This is the function of integrase enzyme. Now there is another enzyme which is present in HIV, human immunodeficiency virus. The name of this enzyme is integrase. And what is the function of integrase? It attach complementary DNA with host DNA. Complementary DNA with host DNA. Now there is another enzyme, last one is protease. Last enzyme is protease. And look at here. Now this DNA, this viral DNA will give message to ribosome to form protein. Now this DNA will transfer message to ribosome to form protein, and ribosome will form protein. Ribosome will form protein for the synthesis of viral RNA, not for the synthesis of for the synthesis of viral protein, not for the synthesis of host protein. This complementary DNA when the message to ribosome for the formation of viral protein, and there are large structural protein will form, and the large structural protein will form like this. Now, virus cannot make its own protein with this large protein because virus are smaller in size.
Virus cannot make large protein with this, with smaller protein with this, with its protein with the help of this large protein. So what happened that there is an other enzyme called protease. And what is the function of this protease enzyme? It break large structural protein into smaller protein. These are large structure. This is large structure protein, and virus break protease enzyme. Now virus has another enzyme which is protease, which break this larger protein into smaller size protein like this. Now these smaller size protein, virus will make its own protein structure. Now the function of the breakdown of this large protein is, which enzyme help in the breakdown of this large protein? This name of this enzyme is protease. Now, as I have told you about, then these three enzymes, name of these three enzymes are reverse transcriptase, integrase, and protease. And I also told you about the function of these three enzymes. तो देखें हम आज क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं HIV वायरस का स्ट्रक्चर। तो HIV वायरस के स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि दूसरे वायरस की तरह HIV वायरस का भी जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको कहते हैं वायरल कोर, और जो इसका आउटर पार्ट होता है उसको कहते हैं वायरल कोट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर में और ये जो व्हाइट कलर और ब्लैक कलर में ये जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, ये क्या है? ये इसका सेंट्रल पार्ट है। तो ये क्या, कौन से वाले पार्ट में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे वायरल कोर में। अब ये जो वायरल कोर है, वायरल कोर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? वायरल कोर में दो रेड कलर के आरएनए आ जाएंगे और उसके साथ ये तीन जो हैं वो एंजाइम्स आ जाएंगे। तो ये आरएनए एक तो वायरल कोड के अंदर वायरल कोर में आ गया, और दूसरा क्या आ गया? दूसरा ये एंजाइम आ गए। अब देखें वायरस के अंदर टोटल कितने आरएनए होते हैं, तो यहाँ पर देखें मैंने आपको बताया वायरस के अंदर 2 आरएनए होते हैं, और ये दोनों आरएनए जो हैं वो आइडेंटिकल होते हैं लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? जो सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का इस वाले आरएनए में होगा वही सीक्वेंस इस वाले आरएनए में होगा, तो ये आइडेंटिकल हो गए। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री अगर होते तो कैसा सीक्वेंस होता? इस आरएनए के अंदर जो सीक्वेंस होता, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है वो दूसरे आरएनए में होता। तो ये क्या हो जाते? ये बेसिकली हो जाते जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये आइडेंटिकल होते हैं तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही रहते हैं, एक दूसरे से अलग-अलग रहते हैं। लेकिन अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री होते तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाते? अटैच होकर क्या बना लेते? डबल स्ट्रैंडेड हो जाते। सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होते, ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाते। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया इन 3 एंजाइम्स के बारे में, जो 3 एंजाइम इसमें मौजूद होते हैं। इन तीनों एंजाइम्स के जो नाम हैं, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, एक इंटीग्रेज है और एक प्रोटीएज है। तो अब देखो तीनों के काम भी मैंने आपको बता दिए। जब होस्ट सेल के अंदर अपना आरएनए एंटर करता है, एचआईवी एचआईवी का जब आरएनए होस्ट सेल में दाखिल होता है, तो आरएनए सबसे पहले डीएनए बनाता है, और आरएनए को डीएनए बनाने में जो हेल्प करता है वो कौन सा एंजाइम करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आरएनए को डीएनए बनाने में हेल्प करता है। जो आरएनए से डीएनए बनता है उस डीएनए को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। फिर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है ये जाकर अटैच होता है किसके साथ? होस्ट के डीएनए के साथ। ये ब्लू कलर में जो नजर आ रहा है ये होस्ट का डीएनए, और होस्ट के डीएनए के साथ अटैच करने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? इंटीग्रेज एंजाइम हेल्प करता है। उसके बाद ये जो होस्ट का डीएनए, ये जो वायरस का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, ये होस्ट सेल के राइबोसोम को मैसेज देगा कि प्रोटीन बनाओ। और ये कैसे प्रोटीन बना कर दे देगा? ये इसको लार्ज साइज के प्रोटीन बना कर देगा। तो लार्ज साइज के प्रोटीन से तो वायरस अपने प्रोटीन नहीं बना सकता, तो इसका सोल्यूशन भी वायरस अपने साथ ही लेकर आया है। उसके पास एक एंजाइम है प्रोटीएज एंजाइम, और प्रोटीएज एंजाइम की मदद से ये इसको छोटे छोटे प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये मैंने आपको जो है वो 3 किस्म के जो है वो एंजाइम जो वायरस के कोर में यानी सेंट्रल रीजन में मौजूद होते हैं उनके फंक्शन भी बता दिए। नाउ आफ्टर दैट, कोट ऑफ virus, HIV virus. Now coat means covering. So there are 3 coverings present in the outer side which form the coat of HIV virus. First one is this yellow covering. Here I have it is circular, but most of the time this covering is more or less conical. This covering is more or less conical. This conical covering
proteinous covering which surrounds the viral core is called capsid. This one, this black is called capsid. This one is capsid. So I will write here the first coat is capsid. The first code is capsid. For example, so for example, this is HIV virus. Now these two RNA and these three enzyme will form the core. Now on this core, around this core, there is a protein coat is present, which is more or less conical. This protein coat is called capsid. This one is capsid. As you all know that capsid is made up of protein subunit, and these protein subunits are called capsomere. These protein subunits are called capsomere. Now, around this capsid, there is another protein which is called shell protein, which is made up of protein matrix. Now, around this shell protein, around this capsid, there is an other protein. This one. There is an other protein. This one, which surround the capsule, which surround the capsid. There is another protein which surround the capsid, and this is called shell protein. This one is shell protein. Now there is an other structure which surround the shell protein, which is called envelope. Envelope is made up of lipid and protein, so we call it lipoprotein. It's lipoproteinous structure. Now you can see here, this is an other yellow color. There is an other membranous covering, which is outermost covering of this virus, and this outermost lipoprotein covering is called envelope. This is called envelope. Now these two coats, these two covering are made up of protein. This capsid is also made up of protein, and this shell is also made up of protein. Now after the outermost membrane, which is called envelope, it is made up of lipid and protein, so we call it lipoprotein membrane. Now on this envelope, there are certain projections, just like this. There are certain projections. These projections are called spike. These projections are called spike, and these spike are made up of glycoprotein. Means these spikes are glycoproteinous in nature. Look at here. These green structures are spikes. These green structures are spike, and they are made up of glycoprotein. Means they are glycoproteinous in nature. The outermost part, this outermost part of this spike is called GP120, and the lowermost part, and this part which is embedded in membrane, this part is called GP41. So spike, this one is GP, this one is GP120, and this one is GP41. Now, what is the function of GP120 and GP41? Look at here. This is envelope, and this is GP120, and this is GP41. Now this is the host cell. This is the host cell, and primary host cell of HIV virus are T cells, helper T cells. Now on helper T cell, there are certain receptors are present,
These receptors are called CD4 receptors. Virus attach with a CD4 receptor of host cell. Now, which structure help in this attachment? The GP20 help in the attachment of HIV virus with host cell with the receptors. So GP120 help in attachment and GP41 help in the fusion. Now fusion of this envelope with this membrane. Fusion of this envelope with this membrane is done with the help of GP41. So I told you about the coats of or the covering of HIV virus. So there are three coverings of HIV virus. First one is capsid, second one is shell protein, and last one is envelope. If you go from inside to outside, if you go from inside to outside, the first covering is capsid, the second covering is shell protein, and last one is envelope. If you go from outside to inside, if you go from outside to inside, the outermost covering is envelope, the second one is shell, and last one is and inner one is capsid. तो ये मैंने अभी आपको जो है वो पहले वायरल कोर के बारे में बता दिया और उसके बाद फिर मैंने आपको अभी कोट के बारे में बताया। तो वायरस के कोट की अगर हम बात करें, वायरस की कवरिंग की बात करें, तो वायरस के पास तीन तरह की कवरिंग होती है। तो सबसे पहली प्रोटीन की कवरिंग जो कि वायरल कोर मतलब आरएनए और एंजाइम को कवर करती है, जो आरएनए और एंजाइम को सराउंड करती है, इसको हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड के ऊपर एक और कवरिंग चढ़ी होती है जिसको हम शेल प्रोटीन कहते हैं, जो कि प्रोटीन मैट्रिक्स की बनी होती है। उसके उसके ऊपर सबसे लास्ट के अंदर एक जो मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है उसको हम एनवेलप कहते हैं। और इस एनवेलप पे कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम स्पाइक कहते हैं। स्पाइक किसके बने हुए होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। और इस स्पाइक के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो दो तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है। एक को हम कहते हैं जो बाहर वाला है, इसको हम जीपी 120 कह रहे हैं, और नीचे की तरफ जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है इसको कह रहे हैं जीपी 41। जीपी 120 इसको होस्ट के रिसेप्टर सेल के साथ अटैच करने में हेल्प करता है। हमें पता है कि टी सेल्स के ऊपर जो है वो क्या होते हैं, टी सेल के ऊपर CD4 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिसके साथ HIV का वायरस अटैच होता है। आप याद रखिएगा कि HIV वायरस का अगर रिसेप्टर्स आपसे पूछे जाएं तो वो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? वो रिसेप्टर बेसिकली जो है वो CD4 जो है वो रिसेप्टर्स CD4 रिसेप्टर के साथ अटैच होता है। और GP41 जो है वो इस मेम्ब्रेन को यानी इस एनवेलप को होस्ट सेल की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करवा देता है। ये काम किसका होता है? ये होता है GP41 का। इसको डिटेल में मैं उस वक्त बताऊंगा जब मैं आपको इसकी लाइफ साइकिल जो है वो बताऊंगा। आज सिर्फ मैंने आपको HIV वायरस की स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्कस करना था। नेक्स्ट टाइम फिर जो है हम इसके HIV के मोड ऑफ ट्रांसमिशन को और इसकी लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे।